general elections in the state, but also the assembly elections which are going to be happening at the same time. What do you make of this kind of confidence that they are exuding at the moment? Do you find any weight behind it, or is YSRCP going to have a clean sweep once again? See, Telugu Desam party has learnt its lesson. In 2018, they came out of NDA on special status for Andhra Pradesh issue. So they have faced a severe loss in 2019 elections. They were wiped out, literally like almost wiped out, Telugu Desam party. So this time around, Chandrababu Naidu has stitched up an alliance with caste issue, caste factor, and Janasena. Film star turned politician Pawan Kalyan, who is a very popular Telugu film star, and he also has put up his candidates. Last time around, they were both there, but both of them had to face people's wrath, and both of them were nearly wiped out. But this time, three of them came together. Bharatiya Janata Party, which was not a major player in Andhra Pradesh in any case, now they have tied up. So three Bharatiya Janata Party, Telugu Desam, and Pawan Kalyan's Janasena party. Three parties are trying to cash in on each other. But as I said earlier, Jagan is also trying very hard on his schemes which he introduced and the deliveries which he has done. That's what he says will help him win one more time. All right, Prasad, we'll let you go for now. We will be touching base again as we get more updates from the ECI minutes from now. Thank you so much for joining in. For more on this, we're also joined by our senior correspondent, Siddharth MP. He joins us from Chennai. Siddharth, I wanted to get your thoughts on this. BJP has been making a major push in Tamil Nadu, with Prime Minister Modi making multiple visits and making repeated Tamil references in his speeches and events. How do you find BJP's presence in Tamil Nadu? Give us a roundup of that. Prime Minister Modi's Tamil push is something that we've seen, in various fora, be it political fora or also international fora such as the United Nations. He's always expressed his love and liking for the language of Tamil. Of course, this is significant given the fact that he's often said that Tamil is the oldest language in the world. He's also quoted from Tamil scriptures and the Tirukkural couplets. So we have to keep in mind that his Tamil push has been there irrespective of whether it's election time or not, be it in national fora, international fora or in parliament. He's often made it clear that he has an affinity for the Tamil language, and during the election and election campaigning also, we must keep in mind that the Prime Minister has actually been trying to make an extra reach to the Tamil Nadu voter, because so far this year at least 6 to 7 visits he's made to the southern Indian state, and in next week also he'll be making multiple visits to Tamil Nadu. So this is how important Tamil Nadu features in the BJP's list. And overall, let's also remember the fact that there are particular pockets in the state that the BJP is betting big on, particularly the southernmost tip, which is Kanyakumari constituency, and also the western part of Tamil Nadu, which includes Coimbatore and nearby constituencies. So these are the places that the BJP is betting big on this time around. All right, moving forward from the Indian Prime Minister Narendra Modi is on a campaign blitz in South India. We brought you a glimpse of that from Tamil Nadu. Of course, it's not the only state where he has made a major presence. After a roadshow in Telangana on Friday, he is holding a series of rallies today as well. Ahead of the announcement of the schedule for Lok Sabha elections, Prime Minister Modi is addressing a BJP rally at Nagar Kurnool in Telangana. Narendra Modi గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణలో कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। और अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है। पहले बीआरएस की महालूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर, ये वैसे ही हालत है जैसे कि कुएं से निकले खाई में गिरे। कांग्रेस के लिए तो पूरा राज्य तबाह करने के लिए 5 साल भी बहुत है।
Prime Minister Modi heads from here to Karnataka, where he will be launching the BJP's campaign in the state. The BJP government has a specific figure that it hopes to surpass. It is the 400 mark, and they wish to reach the target of 370 seats in the coming Lok Sabha elections. And of course, they have their eyes set on a mark greater than that as well. And that is the 49.10% votes that the Congress got when it won 414 seats in the post-Indira Gandhi assassination election of 1984. In other words, to go up from the 37.36% votes it won back in 2019 to somewhere close to 50%, the BJP will need to increase its vote share in almost every state. Prime Minister will revisit all these states again. Now, in Tamil Nadu, the BJP does not have an ally for the first time since the AIADMK quit the NDA bloc last year amid a row over the BJP's state chief, K. Annamalai. Now, the Prime Minister has been targeting the ruling DMK over dynastic politics and corruption, while the DMK has built a narrative around the BJP's attack on federalism and financial discrimination in southern states. Prime Minister Modi is likely to address a NDA rally at Palnadu in Andhra Pradesh, where he, after a long time, would share stage with TDP Supremo Chandrababu Naidu. Just to remind you, Chandrababu Naidu had exited the NDA fold back in 2018, but has now decided to rejoin. Interestingly, TDP had, of course, moved out of the NDA bloc. Shifting focus to the national capital of India, Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party's national convener Arvind Kejriwal today physically appeared in the Rouse Avenue court after skipping 8 summons issued by the Enforcement Directorate in the Delhi excise policy scam. Now, the court granted bail to the Delhi Chief Minister in his 9th ED summons. Kejriwal had been summoned to appear before the Rouse Avenue court on the 16th of March. Speculation had arisen that he could face arrest if he did not appear in court this time. Earlier, Delhi Chief Minister had appeared before the court via video conferencing but did not appear physically, citing confidence motion and budget session in the State Assembly. So far, 6 charge sheets have been filed in the Delhi excise policy scam case. In the 6th charge sheet, the Enforcement Directorate also named Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh and his associate Sarvesh Mishra in the case. The probe agency also claimed that Aam Aadmi Party used kickbacks worth $5 million generated through the liquor policy as part of its election campaign for the Goa Assembly polls back in 2022. को खत्म करना चाहते हैं क्या मोदी जी केजरीवाल नमस्कार कोई बीमा हटेगा नहीं चलो All right, viewers, that's a wrap on this bulletin, but moments from now, we'll be cutting across live to the Election Commission of India, where they will be announcing the dates at the Vigyan Bhavan in New Delhi. These are the dates for the upcoming general elections, which is going to bring in the model code of conduct. Ready to dive into your daily dose of news? Bringing you what's trending in the West and all that's setting trends in the East. And all of this served up with a side of insightful banter. We don't just bring you the latest stories. We bring you your talking points for the day. And while you do that, from the busy streets of New York, I will provide you with deeper insights on the developments through the course of the day in the U.S. From New York, we get you to the sandy shores of Durban, where I'll bring you all the glitz, glam, and happenings from the world of showbiz. Welcome to the Eras Tour. And I will be here at the WION headquarters, getting you all the action from the universe of sport. All that you need to know about your favorite teams and players, right here. The show that keeps you ahead of the global curve. A conversation you'd want to be a part of. A place where news becomes an engaging exchange. We bring you stories that impact your present. This is World DNA. Join the conversation. From the bustling trading floors of Wall Street to the vibrant exchanges of Asian stock markets,
WION breaks it down for you to make sense of what's happening. As we reveal the key factors behind events, strategic battles, and the game-changing business decisions that shape the world. We bring you all of this and more on World Business Watch. Economic turmoil and global unrest have cast a shadow over President Joe Biden's approval ratings. The rockets are continuing to be fired by Hamas in Gaza, although at a slower rate than previously. So, right now, we are with the volunteers from the Aleppo municipality. They are still trying to go to the rescue for the people they can find out. India has emerged as a major diplomatic force at the world stage. The rising cost of living in Nigeria continues to impact citizens from all walks of life. The citizens of Gujarat witnessed a mega roadshow here in the city of Ahmedabad. China is South Africa's largest trading partner for 134 years straight. A domestic aircraft carrying 72 people on board crashed in Pokhara city in central Nepal. 165 injured have been moved. 61 people are confirmed dead and rescue operations continue around me. After receiving an entire season's rainfall in a span of 48 hours, Chennai city has literally been brought to its knees. For WION, World is One. On the next episode of World of Africa, memories of the Chibok kidnappings revisit Nigeria, forcing Kaduna State to be on high alert after gunmen stormed a school and kidnapped over 250 students. Senegalese presidential candidates launched their shortened campaigns 2 days after a court confirmed the election will be held on March 24th, ending weeks of uncertainty and kickstarting a competition that remains wide open. And meet a woman entrepreneur tackling hunger and empowerment through fishery in Nigeria. Watch World of Africa at these times, only on WION. World is One. This week on Melt, consumer strategy expert Rama Bijapurkar talks about her latest book, Lilliput Land, and about why small is the new big. Supply is inhibiting consumption because the consumer is ready, willing, waiting, and the supplier is saying, you know, let the ugly duckling become the beautiful swan. I only want the rich consumer. I'll think about it. So my advice to CMOs would be that the small sector is actually getting more agile, more nimble, more customer oriented. And so you will have greater and greater trouble proving value to the consumer. So please take a look at them and learn from them. Economic turmoil and global unrest have cast a shadow over President Joe Biden's approval ratings. The rockets are continuing to be fired by Hamas in Gaza, although at a slower rate than previously. So, right now, we are with the volunteers from the Aleppo municipality. They are still trying to go to the rescue for the people they can find out. India has emerged as a major diplomatic force at the world stage.
The rising cost of living in Nigeria continues to impact citizens from all walks of life. The citizens of Gujarat witnessed a mega roadshow here in the city of Ahmedabad. China is South Africa's largest trading partner for 134 years straight. A domestic aircraft carrying 72 people on board crashed in Pokhara city in central Nepal. 165 injuries have been moved. 61 people are confirmed dead and rescue operations continue around me. After receiving an entire season's rainfall in a span of 48 hours, Chennai city has literally been brought to its knees. South Africa, for WION, World is One. This week on E-Club, we look at the predictions by The Simpsons that ended up being true, and get you a list of all that happened at the 96th Academy Awards. We also tell you some rare facts about the Indian superstar Alia Bhatt as she turns a year older. With me, Alison Lagrange, at these times only on WION. This week on Melt, consumer strategy expert Rama Bijapurkar talks about her latest book, Lilliput Land, and about why small is the new big. Supply is inhibiting consumption because the consumer is ready, willing, waiting, and the supplier is saying, you know, let the ugly duckling become the beautiful swan. I only want the rich consumer. I'll think about it. So my advice to CMOs would be that the small sector is actually getting more agile, more nimble, more customer oriented. And so you will have greater and greater trouble proving value to the consumer. So please take a look at them and learn from them. Ready to dive into your daily dose of news? Bringing you what's trending in the West and all that's setting trends in the East. And all of this served up with a side of insightful banter. We don't just bring you the latest stories. We bring you your talking points for the day. And while you do that, from the busy streets of New York, I will provide you with deeper insights on the developments through the course of the day in the U.S. From New York, we get you to the sandy shores of Durban, where I'll bring you all the glitz, glam, and happenings from the world of showbiz. Welcome to the Eras Tour. And I will be here at the WION headquarters, getting you all the action from the universe of sport. All that you need to know about your favorite teams and players.
right here. The show that keeps you ahead of the global curve. A conversation you'd want to be a part of. A place where news becomes an engaging exchange. We bring you stories that impact your present. This is World DNA. Join the conversation. This week on the West Asia Post, Ramadan has begun, but for Gazans, fasting has been replaced by starving. Biden-Netanyahu tensions are now on the public stage. Can there be a fallout soon? And Istanbul airport has a new attraction. There are now therapy partners to help calm those nerves. All this and much more. Catch the West Asia Post at these times, only on WION. World is One. Hello and welcome. You're watching WION World is One. My name is Mohammed Saleh and this is our special broadcast on the big developing story that is unfolding at this moment at the Election Commission of India office is where all the action is happening. And in a few moments from now, we'll get to know the election dates for the Lok Sabha elections and also the elections for 4 states that are to be announced. So these are live images that we're looking at that are being beamed straight from the place where the Election Commission is expected to, of course, announce the dates for the Lok Sabha elections for the year 2024. The tenure of the present Lok Sabha ends on the 16th of June and a new house has to be constituted before that. This is, of course, the world's biggest democracy, the biggest electoral exercise anywhere in the world. Let's, in fact, now cut across to what's, in fact, being said there and listen in to what the Chief Election Commissioner of India, Rajiv Kumar, has to say. It's a big day today for all of us at ECI, and I would like to formally welcome you to this press conference to announce the schedule for general elections and some state assemblies. It's my privilege to introduce the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar Ji, the Honorable Election Commissioner, Shri Ganesh Kumar, and the Honorable Election Commissioner, Dr. Sukhbir Singh Sandhu. Also on the dais today are senior officials who have been a part of Team ECI in the past 2 years and have played a crucial role in the run-up to the general elections. Namely, Senior Deputy Election Commissioners Shri Dharmendra Sharma and Shri Nitesh Vyas. Also DECs Shri Udesh Kumar, Shri Ajay Bhadu, Shri R.K. Gupta and Shri Manoj Sahu. All right, so we are just expecting the press briefing there by the Election Commission of India to begin in a moment's notice from now. Because remember, the Election Commission will, of course, announce the schedule of the upcoming Lok Sabha polls and the dates and also the number of phases in which this election will be conducted is what is expected to be announced. The tenure of Andhra Pradesh, Sikkim, Arunachal Pradesh and Odisha assemblies will also end in June. As many as about 97 crore people are eligible to vote in the upcoming polls. You must hear that number again. There is 97 crore people. There is 970 million people across the length and breadth of India who will, of course, be voting in these elections, will be eligible to vote in these elections. In the last parliamentary polls, the Bharatiya Janata Party, which at this moment is seeking its 3rd consecutive term, had won a majority by 303 seats, while the Congress had been reduced to 52 seats. Let's now listen in to Rajiv Kumar, the Chief Election Commissioner. Distinguished colleagues, let me introduce you to them. Shri Ganesh Kumar ji on my right and on your left, and Shri Sukhbir Singh Sandhu ji on my left. Senior officials from Election Commission of India, friends from media,
और विभिन्न संचार माध्यमों से जुड़े हुए देश के मतदाता, आप सबको सबसे पहले अभिनंदन, नमस्कार। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। As you see, our team is now complete. All three of us are here and we are fully prepared. So now our request is to all the voters to get inked. Please, the entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us. I think this is the most awaited press conference in this part of the year. We address you at a precious moment when we as a nation are set to reiterate our pledge to electoral democracy, when Indians will together express their will once again. This is a historic opportunity for all of us. By the way, this year also marks a pivotal moment in the global landscape of democracies. 2024 is a year of elections across the world. Over 6 nations and people will vote across the hemispheres, across the date lines. However, India's elections have been like a pole star, both for its quantity and quality, and I'll elaborate it in detail in this conference. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है, जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। Let me say in the very beginning that it is our promise to deliver a national election in a manner that we add to our global shine and remain a beacon for electoral democracies across the world. We are committed to give the nation a truly festive democratic environment. Friends, the term of 17th Lok Sabha is due to expire on 16th June 24. The term of legislative assemblies of Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal, Sikkim are also due to expire in June 24. जम्मू कश्मीर असेंबली में भी चुनाव ड्यू हैं। We in the Commission understand with all humility at our command, that every election is a new test and failure is not an option. The entire election machinery has been trained on all aspects of election management. I had myself personally interacted with over 800 district magistrates across the length and breadth of the country. We have interacted with the SPs, DMs, commissioners, range IGs, political parties, enforcement agencies in Delhi and also while visiting the states. और पूरी स्टेट्स में इन सबके साथ समीक्षा करने के दौरान और उसके बाद हमें ये विश्वास है कि हम एक यादगार, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव एक पर्व के रूप में सबकी भागीदारी के साथ सुनिश्चित कराएंगे। बिफोर आई शेयर द शेड्यूल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से विविध इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर द 2 years पीरियड तैयार किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो लेट अस शो यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बाय विच वी आर डूइंग दिस इलेक्शंस। वी हैव 97 crore registered voters, more than the combined voters of a few continents put together, America, Europe, Australia, all many put together. Over 10.5 lakh polling stations, and कितने लोग उसको कंडक्ट करते हैं? 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles, और अब तक हम क्या कर चुके हैं? 17 जनरल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, 400 से ज्यादा असेंबली इलेक्शंस कर चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन का एक लीगेसी है। 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, 16 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, a truly gold standard. It's a gold standard in the entire election management. Friends,
there is a qualitative leapfrog which Commission is ensuring, which would be shown by the outcomes of the 11 state elections which we have held recently. पिछले 1-1.25 साल के अंदर में 11 इलेक्शंस स्टेट असेंबलीज के देश में हुए हैं, और आज जो हम नए जो 2024 में जा रहे हैं तो इस दृढ़ता के साथ जा रहे हैं कि जो उनके आउटकम्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं। पहले वो पीसफुल हुए, वायलेंस फ्री हुए। जो इसमें से 1-2 स्टेट में वायलेंस होती थी वहां भी वायलेंस नहीं हुई। नियर जीरो रूपोल्स और कैंपेनिंग जो क्लटर है, जो नॉइज है, जो कैंपेन के दौरान होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें भी घटित देखने को मिली। कोर्ट केसेस रिड्यूस हुए, कोर्ट की टिप्पणियां जो अनावश्यक या हमारे ऊपर में होती थी वो कम हुई, सीजर्स बढ़े, और फेक न्यूज पर एक एक्शन लेने का जो तरीका था वो बहुत बढ़ा। तो लास्ट 2 इयर्स में इसको और रोबस्ट करने के लिए हमने क्या क्या किया है ये हम आपको आज दिखाएंगे, और उसको कैसे बेहतर करेंगे ये भी दिखाएंगे। हम कहां पहुंचना चाहते हैं, इस इलेक्शन को किस तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं, ये भी आपको लास्ट स्लाइड में दिखाएंगे। अभी जो इलेक्टरल साइकिल है उसमें हमने कितनी तैयारी की है ये हम आपको आज शेड्यूल बताने से पहले बताना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो इनपुट के रूप में हमारा जो इलेक्टरल रोल है वो प्योर होना चाहिए। ये फाउंडेशन है किसी भी अच्छे चुनाव के लिए। उसमें जिसको होना चाहिए वोटिंग में वो है, और जिसको नहीं होना चाहिए वो नहीं है। हमने इलेक्टरल रोल में बहुत मेहनत की है। इनपुट के तौर में मटेरियल, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इतनी चीजें लगती हैं। प्रोसेस के रूप में जो डिसरप्टिव चैलेंजेस हैं, मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, एमसीसी वायलेशन, और रीचिंग आउट टू द मिसिंग वोटर्स, अर्बन अपैथी, यूथ अपैथी, और ओवरकमिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस जिसमें रीचिंग इन इनएक्सेसिबल एरियाज इन दिस वाइड कंट्री, एंड व्हाट आउटकम्स वी वांट, दैट इज व्हाट इज वी विल टेल यू लिटिल लेटर ऑल्सो। तो पहला जो इनपुट है ये एक मोज़ेइक है जो देश की वोटर्स की, इलेक्टर्स की पिक्चर है। क्या दिखाती है ये? इट्स अ वेरी डाइवर्स मोज़ेइक। 96.8 crores are the total electors in the country, of which 49.7 crore are male and 47.1 crore are female. और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टरल रोल्स में हैं। और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं। 1,80,00,000 18 से 19, और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग, जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स in the democracy, because they have a larger time to contribute in the society. अगर हम देखें तो बहुत इंक्लूसिव करने के लिए there are 88.4 lakh persons with disabilities who are part of our voter list. We have made a special effort कि जितने हमारे मतदाता हैं उस तरह के उनको हम अपने इलेक्टरल रोल में लेके आए। 82 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से ऊपर हैं, और वो हमारे प्राउड मतदाता हैं। वी फील वेरी प्राउड टू हैव देम विद अस। और उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मतदाता भी हैं जो हमारे इलेक्टरल रोल में। सो द मोज़ेइक इज, ट्रांसजेंडर्स भी हैं 48,000। तो मोज़ेइक इज लाइक 18 से 19, 20 से 28, 85 ट्रांसजेंडर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एंड इन द एंटायर कंट्री, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। इस रिगरस जो प्रोसीजर है इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ये मैं दिखाना चाहता हूं कि हर स्टेज पे इलेक्टरल रोल के प्रिपरेशन करते समय पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि कोई हमसे ये ना प्रश्न कहे कि आपने अपने से इलेक्टरल रोल बनाया और हमें बताया भी नहीं। सो व्हेन द इलेक्टरल रोल प्रिपरेशन स्टार्ट्स, वी मेक ए ड्राफ्ट पब्लिकेशन। We give 2 copies free of cost to the political parties. उसके बाद जितने फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, नया नाम जुड़ने के, डिलीशन के, मॉडिफिकेशन के, मेरा नाम घर बदल गया,
वो सब की कॉपी हम शेयर करते हैं, उसके मिनट्स बनाते हैं। और इस बार हमने और जोर दिया कि बूथ लेवल एजेंट्स अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारे BLOs के साथ लगाना चाहें तो लगाएं। और अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, वी आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट दैट साइलेंटली वी वर वर्किंग। सबने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1, 2, 3 मीटिंग्स की हैं, उनको सारे ड्राफ्ट रूल्स दिखाए हैं, दिखाने के बाद जितने ऑब्जेक्शंस हैं वो उनको पूरा किया है और उसके मिनट्स बना के रखे हैं। फ्रेंड्स, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट that and we are conscious that a very solid electoral roll is the foundation stone on any election, and we are ready to go with this. We have also worked on the women voters. Women voters का जो gender ratio है वो बढ़ के अब 948 हो गया, which is again a very healthy sign of women participation increasing in our इलेक्ट्रल साइकिल। राज्य, देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज 1000 से ऊपर जेंडर रेशियो है, यानी महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज्यादा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जुड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स हैं। So they are going side by side, and this is again a very healthy sign that women are also equally participating in our election. और जैसे women participation है, ऐसे ही youth participation is another area which the Commission is very conscious, and Commission is also consistently focusing on. 13 से जो 1.8 करोड़ मैंने आपको बताया, 19 करोड़ वोटर्स 20 से 19, और जिस किसी की भी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी, उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है। एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट दैट आउट ऑफ 13.4 lakh एडवांस एप्लीकेशंस व्हिच हैव कम टू अस, around 5 to 6 lakhs are such who will complete the age of 18 by 1st of April 2024, और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे। यानी the roll would be as much updated on 1st of April कि कोई भी छूटे नहीं। नेशनल आइकन्स को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है। हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने 10 दोस्तों को भी लेके आएंगे। और इस बार हम कन्विंस्ड हैं अपने डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज की वजह से कि वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। फ्रेंड्स, जब हम वोटर्स को अपने बूथ पे बुला रहे हैं तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें। कैसे तैयार करें? हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा, मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा, और शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी। यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल एट ऑल द पोलिंग स्टेशंस, और दीज पोलिंग स्टेशंस विल बी सेट अप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हों, या दक्षिण में कन्याकुमारी का समुद्र तट, पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेके अरुणाचल के जंगल और मेघालय के वेटेस्ट रीजन, इलेक्शन कमीशन देश के हर कोने में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन, अपने पर्सनल को लेके जाएगा, एंड वी विल टेक डेमोक्रेसी टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, and we are sure that we would make it a very overwhelming experience for our voters. And then the voters delight, पोलिंग स्टेशंस इस तरीके के मिलने चाहिए जिसमें ये सभी चीजें आपको मिलें। Then how would we ensure that it is also inclusive? Inclusive in the sense 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे।
देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40 इयर्स एंड 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज़्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। उनको वॉलंटियर्स और व्हील चेयर की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी। नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया है। दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी। आई मीन हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल। पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे। सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सकें। मैं इसी क्रम में आगे थोड़ी अर्बन एपैथी की भी बात करूंगा। हम इतनी जब मेहनत करते हैं जाने में, हम देखते हैं जहां घर के नीचे बूथ है वहां पे बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आते। ये उनके लिए भी एक उदाहरण है कि वो ये समझें कि वोट देना कितना जरूरी है। अगर हम 10 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए बूथ बना के इतनी मेहनत से जा सकते हैं, तो आप घर के नीचे उतर के जो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास बूथ है उसमें वोट देने जरूर आएं। फ्रेंड्स, वी आर ऑल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट द सस्टेनेबल इलेक्शंस एज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इलेक्शंस हों, इसके लिए भी हमने डायरेक्शंस अपने इलेक्शन मशीनरी को दी है। वेस्ट मैनेजमेंट किसी भी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग के बाद में दिखाई नहीं देना चाहिए। आप उसको कलेक्ट करें, डिस्पोजल करें और टीम्स के साथ में सेंड देम टू वेरियस डिस्पोजल थिंग। इट्स पार्ट ऑफ द मटेरियल अरेंजमेंट। मिनिमल यूज पेपर का करें। मैक्सिमम हमारी ई बुक्स लागू हैं, आप कभी भी हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट पर ई बुक है। मोर एंड मोर कार्बन फुटप्रिंट्स को हम कम से कम किस तरह से कर सकते हैं, रिसाइकलिंग, मोर एंड मोर लेस एंड लेस पेपर वर्क, ऑल दैट is what is our commitment to the environment. We are also greatly leveraging technology in 3 verticals for the help of the voter, for the help of the election management agencies, machinery, and also for the political parties and candidates. कोई भी वोटर पूरे देश में उसका एपिक नंबर से बूथ कहाँ है उसका एपिक डाउनलोड करना है। इफ ही हैज ए मोबाइल नंबर सीडेड, ही कैन डाउनलोड हिज और हर मोबाइल। कोई भी बीएलओ के बारे में कोई जानकारी लेनी है, वन कैन गो टू द वोटर हेल्पलाइन ऐप। यू कैन नो अबाउट what kind of a candidate you have in your constituency who are contesting. So there is an application called Know Your Candidate. तो उस कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके खिलाफ में केसेस तो नहीं है, उनके क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें केवाईसी के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी। और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी कैंडिडेट का, उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा, तो बाकी क्यों नहीं मिला। आप बताइए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द selection of a candidate who has a criminal background. Then, in order to clean up the entire system, we want to use the technology with the help of the citizens. Citizens, be please vigilant. So, C-Vigil ऐप में कोई भी शिकायत अगर किसी सिटीजन्स को, किसी वोटर को करनी है, कहीं पर भी कोई पैसा बांटने का केस है, फ्रीबी बांटने का केस है, एक्सेस कैंपेनिंग का केस है, जस्ट टेक ए फोटो और टाइप टेक्स्ट, सेंड इट टू अस,
We will capture your longitude and latitude ourselves. आप कहाँ पर खड़े हैं ये हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे और आपको 100 मिनट के अंदर अपनी टीम भेजकर जो आपकी शिकायत है उसका निराकरण हम आपको करने देंगे। फ्रेंड्स, इस सारी चीज को करने में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। मैं आज आपके सामने उन चैलेंजेस की भी चर्चा करना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो मेनली 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं, 4 M's: मसिल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वायलेशंस। एसेंशियली 4 किस्म के ब्रॉड जो हमारे प्रोसेस हैं और इसी के संदर्भ में पूरा जो प्रोसेस अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाव खत्म होगा तो इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं 4 चीजों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल मसिल पावर, हाउ टू कंट्रोल मनी पावर, हाउ टू कंट्रोल द menace of misinformation and how to control the violations which are done or alleged to be done under MCC. So coming to the muscle पावर को कंट्रोल करने के लिए adequate number of CAPF would be deployed. 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसिल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे: टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। So one senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these 5 feeds. जहां से भी, और सी विजिल, 6th सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री हमने बड़ी सख्त ताकीद दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, SSPs अपने एरिया में हिंसा को ना होने दें। जितने नॉन अवेलेबल वारंट्स आज की डेट में हैं, पुलिस उनको ऑलरेडी हमारे विजिट्स के साथ साथ ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर चुकी है, कर रही है। साथ ही जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको भी बहुत तेजी से देख रही है। देयर इज ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ चेक पोस्ट विच हैव बीन सेट अप इन द इंटरनेशनल बॉर्डर, इन द इंटर-स्टेट बॉर्डर एंड ऑन द नोड्स फ्रॉम वेयर some kinds of irregular, illegal goods can move across the states. In some international borders, there is also a drone-based checking which will happen. We are fully committed that हिंसा का कहीं कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बहुत सख्त हिदायत दी है कि जितने लोग 3 साल से ऊपर हैं उन सबको आप बदल दीजिए पहले, और अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नॉट बिलो। ये उनका काम है कि जो नीचे हैं वो उनको देखें। किसी भी प्रोसेस में वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ किसी भी स्टेट ने लगाए वो इस्तेमाल नहीं होंगे। बहुत सारी स्टेट्स ने टेम्परेरी वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लगा के रखा है, वो किसी भी स्टेज में इस्तेमाल नहीं होंगे। डबल वोटिंग, इम्पर्सोनेशन की भी शिकायत आती है। बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इम्पर्सोनेशन के केसेस आए तो आरपी एक्ट की सेक्शन में उनके खिलाफ एक्शन लें। साथियों, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। ओनली पीस इज एवरलास्टिंग, वायलेंस डजंट सॉल्व एनीथिंग। We will request everyone, all political parties, all candidates, that they must be very, very, very cautious of this point. We'll be ruthless if anywhere the violence happens.
Similarly, coming to the money, आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि पिछले जो 11 इलेक्शंस हुए हैं स्टेट में, राज्यों में, और उसी की वजह से ये कन्विक्शन है जिससे हम आपसे उसके बारे में बात कर रहे हैं. We are talking to you from the strength of our outcomes. 3400 करोड़ रुपए के करीब का कैश मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया 11 इलेक्शन में. एवरी स्टेट, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, हिमाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में उससे पहले इलेक्शन में जो भी हुआ था उससे 200, 400, 500, 700% की वृद्धि हुई. टोटल 3400 करोड़ इज अराउंड 835% हायर. ये जो धन बल का जो उपयोग है, जो धन का उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज्यादा है, ऐसी धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज्यादा है. हम इस बात से भी बहुत वाकिफ हैं. वी आर अवेयर fully that there are differential vulnerabilities in each state. Some states have more violence, some states have more money, some states are more kind of a geographical problems. So whichever problem pertains to a particular state, based on this differential analysis, we would be having a differential level of treatment for that state. Misuse of money हम नहीं होने देंगे. इसके लिए भी हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सब स्टेट्स में एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की है. दिल्ली में हम सब हेड्स ऑफ द एजेंसीज के साथ फिर से बैठक करने वाले हैं आज के बाद तुरंत. क्या कहा है उनको हमने कहा है कि जो फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन्स, whatever kind of freebies किस किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें. रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें. सो whom have we directed? GST, एक्साइज, स्टेट पुलिस, all agencies, income tax, customs, coast guards, BSF, SSB, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है. जीएसटी वुड बी डूइंग द ई-वे बिल बेस्ड एनालिटिक्स टू सी इफ देयर इज ए ट्रेंड ऑफ spurt in the demand for the FMCG in certain areas. Banks would look at if there is a demand, spurt in demand of the cash in the chests. So, National NPCIL will look at if there is a spurt in demand for the payments from the wallets. डिजिटल पेमेंट से तो पैसा नहीं जा रहा है. एक दो स्टेट में ऐसा भी देखने में आया था कि आप अपने वैलेट के थ्रू किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते रहिए, 2,000, 1,000 रुपये. ऑल दैट वी विल बी लुकिंग एट. बैंक्स वुड बी सेंडिंग ऑलमोस्ट डेली रिपोर्ट ऑफ द सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस विच दे हैव. ऑल एयरपोर्ट्स इन द कंट्री वुड बी चेक्ड रेगुलरली बाय द डेडिकेटेड टीम्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर any kind of movement through the air strips. और जहां जिन राज्यों में एयर स्ट्रिप्स कॉमर्शियल के अतिरिक्त हैं, जहां हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं, वी हैव आस्क्ड एंड वी हैव गॉट एक्चुअली द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ऑफ सिक्योरिटी टू इशू डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस कि जिस किसी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड फ्लाइट उतरेगी, वहां जो भी सामान उसके अंदर में उसकी एज पर द डायरेक्शंस, एज पर द instructions and guidelines of the BCS, almost equal to the commercial airports, checking hogi. Railways, RPF, GRP, both will be simultaneously, continuously looking at. Roads. So, cash or money, जो भी धन बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे, political finance in any case is a thing which is in news these days. So, this is our effort to add to that thing so that there are much more cleaner elections. Coming to the third M, which is the misinformation. This also troubles us a lot during the elections. While we are conscious of two facts, that the social media helps us in taking out our outreach programs. जितना हम यूथ, विमेन, वोटर्स को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, उस मीडियम को यूज करते हैं. वी आर ऑल्सो कॉन्शियस दैट ऑन सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी
there is a full freedom to criticize anybody, including criticizing us. Why not? If we are doing wrong, criticize us. But you should not be allowed to create fake news which is not based on facts, because it can disturb the public order. ये अफवाहें फैलाते हैं, तो हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया। ये कुछ इस तरीके की नई चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी। मैंने मसिल पावर के बारे में भी बताया, मनी पावर के बारे में भी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जो आज से शुरू हो रहा है काउंटिंग के बीच तक, जिसमें शोर शराबा गंदगी की संभावना बनी रहती थी, वो हमारा प्रयास है कि कम से कम हो। उसके प्रति हम बहुत ज्यादा सजग रहें। इसमें क्या करेंगे? अंडर सेक्शन 69 and 79(3) of the IT Act, authorized authority of each state is empowered to ask for takedown of the social media posts. In almost all states, authorized officials have been appointed or are being appointed. In each district, we have done thorough trainings as to how to deal with this kind of a menace. So this is on the preventive side. But there is also a promotional side. All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative, which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. We will also launch very soon on our website something called myth versus reality. This is going to be live very soon. Means ये myth फैलाया जा रहा है, ये उसकी reality है। हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के आपको educate करेंगे कि ये उसकी reality है। और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें। मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है। मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं। नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट प्रॉब्लम। चुनाव के दौरान हमारे सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है चुनावी प्रक्रिया का, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, जिसमें एज वी कॉल इट, इट्स ए प्लम्टिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अगर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्ट्रांग एडवाइजरी इशू की हैं, आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी, उसके बाद एक्शन क्या होगा, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। एडवाइजरी इशू की हैं, जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी एमसीसी के वायलेशंस होते रहे, उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर द 24th। सो दिस इज हाउ वी हैव सेट आवर ग्राउंड्स, एंड व्हाट वी हैव डन इन दैट, वी हैव सेट, we are putting political parties on notice. Means we have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. Political parties के जितने भी बड़े नेतागण स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे, उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए। ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पुट देम ऑन नोटिस and we will presume knowledge of the guidelines. These are the two fundamental changes which we have made silently. People were asking, you issued so many notices last time, did nothing. You left it at that. That was a moral censor. Now we will go beyond. We will go beyond, and here we have said we will also look at the past. We will also look at the history. We might look at a calibrated approach dealing with the MCC violations, which may be, जो एमसीसी वायलेशंस किस प्रकार की हो सकती हैं। आई मीन स्टेटमेंट्स which should inspire rather than divide, issue based campaign हो, hate speeches, religious speeches, private life का criticism is what is absolutely avoidable,
people should be refraining from giving unverified and misleading advertisements or masquerading as an advertisement as a news. इसमें हमने एडिटर्स को भी एडवाइजरी इशू की है. वो एक न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा ऊपर में छप जाता है कि इसकी लहर और उसकी लहर. अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि ये एडवर्टाइजमेंट है. लेट इट नॉट पास थ्रू एडवर्टाइजमेंट. वी हैव इशूड दीज एडवाइजरीज. नाउ द टाइम इज ड्यूरिंग दिस इलेक्शन to go beyond advisories, take concrete action, for which in the advisories there are relevant sections of the acts which are also inbuilt. So notice is there, knowledge is there, sections are there. So please, our request is कि campaigning के दौरान please don't try to cross the red line. ये वैसे भी इसलिए जरूरी है that in this digital world जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है. सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बैड वर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ. प्लीज बी सिविलाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन. दिस इज व्हाट इज आवर एडवाइस. और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है. रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए. तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है? थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो. फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज को और भी बहुत सारी स्ट्रीमलाइन करने के लिए उनकी एक्टिविटीज को हमने कदम उठाए हैं. ये मैं पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हर फील्ड के अंदर में वी आर रेडी दैट हाउ वी वुड कंट्रोल दिस. क्या किया है? अराउंड 537 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन टेकन आउट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेस. वो क्या करती थी? किसी के नाम में कैंडिडेट खड़ा कर दिया, गाड़ियों की परमिशन ले ली, दूसरा कोई यूज कर रहा है, किस्म किस्म की भांति एंटाइटलमेंट ले लिया, भांति भांति का वो देवर क्लटरिंग द पॉलिटिकल स्पेस, क्राउडिंग आउट द जेन्युइन पर्सन्स. सो दैट इज व्हाट इट हैज बीन डन. सारी फाइनेंशियल जितने भी अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और जितनी भी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं वो सब डिजिटाइज्ड फॉर्म में हमारे पास आएंगी, ऐसा हमने उनको कहा. डायरेक्शंस दे दिए, इट इज स्टार्टेड कमिंग. तो जो भी पॉलिटिकल फाइनेंस की चर्चा देश में चल रही है उसके साथ साथ ये भी कार्य पीछे से बैकग्राउंड में चल रहा है, बिकॉज कमीशन ऑलवेज बिलीव्स इन द ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फाइनेंसिंग. Plumping level, I have already said. We have also asked the political parties to be very, very respectful to the persons with disabilities in their discourse, not to use the abusive words, also to not use children at all during the campaigning. बच्चे नहीं है इसलिए कि उन्हें कैंपेनिंग में लाया जाए. We will be very strict if anybody does that. We are also giving advisories to political parties that have internal organizational structures within your party, within the parameters and in a right form. Friends, we are appointing 2,100 observers. जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब चीज को फील्ड ऑफिसर्स तो करेंगे ही करेंगे. हम 2100 ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट कर रहे हैं और इस बार उनको हमने क्या खास सख्त हिदायत दी है. और जो भी डीओज लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इसको देखेंगे. इंड्यूसमेंट एंड कोअर्शन, इंटिमिडेशन फ्री इलेक्शन हो, इस पर स्पेसिफिकली नजर रखेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे. फोर्स जितनी भी जा रही है किसी भी राज्य में उसका डिप्लॉयमेंट रैंडमाइज्ड हो. ऐसा नहीं कि उस फोर्स को कहीं बैठा दिया, काम नहीं कर रही, या कहीं दूसरी जगह भेज दिया जहां जरूरत नहीं है. दे विल बी रैंडमाइजिंग द फोर्स. Entire election machinery will be randomized in the presence of the observers. Now, having done all this, what are the, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था, तो what are we expecting? हमारे elections कैसे होंगे? So, let me show you this. What is our effort? What is our endeavor? As a last slide, let me tell you. There are reduced repolls. That is what we are endeavoring. Zero violence, that's what we are endeavoring. No inducements, जिस पे कार्य हो. फेक न्यूज कर्व की जाए. कैंपेनिंग क्लटर
और बदमिजाजी कम हो और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। जो 67% पार्टिसिपेशन था वो बढ़ के अधिक से अधिक पहुंचे। विद दिस आई वुड लाइक टू इन द एंड अपील टू द वोटर्स दैट इलेक्शंस बिलोंग टू यू। बहुत मेहनत की है हमने 2 साल में, आगे भी करेंगे, लेकिन दामोदर अब आपके हाथ में है। वी आर हैंडिंग ओवर द बैटन टू यू, प्लीज कम एंड वोट। पॉलिटिकल अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, वो आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है। इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें। उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो विल बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती। अगर 1-2 करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे। विल बी रूथलेस। एंड लास्टली my appeal to the political parties again. We are very committed for ethical political discourse. I would like parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning and refrain from abuses and personal attacks. राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है। तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके। विद दिस आई वुड वंस अगेन थैंक ऑल द प्रेस मीडिया हु हैव कम हियर वेरी सिंसियरली। दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन नाउ 3.5 years. यू आर आवर नेचुरल एलाइज, यू आर आईज एंड ईयर्स। हमारा कोई क्रिटिसिज्म होता है आप करते हैं, हम अपनी बात कहते हैं आप करते हैं। आप ही के थ्रू हम वोटर्स पे पहुंच सकते हैं। प्लीज वोटर्स तक हमारी बात पहुंचाइए, उनको बाहर निकलवाइए। ये सारी स्लाइड्स, सारा प्रेजेंटेशन आपको अभी तुरंत इसी माध्यम से हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। डाउनलोड, यूज इट इन योर स्टोरीज। कुछ और चाहिए तो हमें बताइए, हम देंगे। नाउ आई कम टू द शेड्यूल विच यू वर वेटिंग and I hope I didn't delay it. I have not bored you by what I said. So now we'll be announcing schedule in 3 phases. First, for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country जहां by-poll होना अभी है due. बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है। आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की, 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं, ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे। और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है। वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा। बट ऑल दी 26 assembly constituencies will go to the by-poll so that during this election itself we can complete this entire process. अगर आपने नोट कर लिया हो तो now I come to the assembly elections. साथियों, 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं। सिक्किम जो 2 जून को विद 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा जून 24th जून with 147 assembly constituencies, Arunachal Pradesh on 2nd of June with 60 assembly constituencies, Andhra Pradesh on 11th June 24 with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. They will be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held.
So now, when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of Gazette notification would be 18th of April 2024, और date of poll would be 13th May 2024. तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13th May 24 को होगी. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजेट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी. 20 मार्च को गजेट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल. सॉरी 19 अप्रैल को. 20 मार्च 19 अप्रैल. इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल. 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल. उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड इन phases, and first phase would be on 18th April and date of poll would be 13th May. Fifth phase में होगा second phase of the Assembly of Odisha 26th April and 20th May. Then sixth phase and seventh phase also Odisha would have the Assembly elections. Sixth phase being on 29th April and 25th May elections. ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो. कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, बिगेस्ट. 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs. तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग. कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग. छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं. शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल Phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है. फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है. और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी. सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस. ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा. तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है. सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में. सेकंड फेज नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here, in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे.
So this is the map which would be phase 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे. फेज 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा. इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा. राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे. फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा. इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, North East would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी. 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी. बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी. काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you. And phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा. लास्ट फेज, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा. This is how the map will look. Yellow denotes the first phase and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें. ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है. विद दिस, जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी. 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी. और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. विद दिस फ्रेंड्स, आई एंड माई एड्रेस एंड थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir, for those detailed remarks. Please hold on. So, you raise your hands, हाथ खड़ा कर दीजिए. माइकर्स आपके पास आएंगे. तो we will start with you in the first row. Where are the micers? आप आइए, इनको दे दीजिए. जो, yeah, CC sir will take 4-5 questions at one time. So after that we'll take the next person. Yeah. Sir, मैं मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से. सर, मेरा सवाल ये है कि
आपने 7 चरणों में मतदान ये करवाया है, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। अपोजिशन पार्टियां जो है ये आरोप लगा रही हैं कि 7 चरणों में क्या जरूरत है और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है। और छोटा सा सवाल सर एक और है कि ईवीएम को लेके लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है, सवाल उठा रहा है। आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो उनके सवाल के बारे में आप क्या जवाब देंगे? आप ये जो लाइट जैकेट पहने हैं सेंटर में, इनको दे दीजिए जो, हाँ, जस्ट होल्ड ऑन। सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शोरान है। आई वुड लाइक टू आस्क कि जो आपने बताया कि 3500 करोड़ रुपए को सीज किया, उसके बाद कार्रवाई कितने लोग जेल गए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, और जो लीकर सीज किया गया उसमें कितने केसेस रजिस्टर हुए, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कभी शेयर करता नहीं है आफ्टर द इलेक्शन हैपन्स। दिस लेडी इन द फ्रंट या इधर मिडिल में जो है, इनको माइकर्स, हाँ, इनको दे दीजिए, या इनको दे दीजिए, हाँ, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Samir Hussain from BBC News. This is an incredible feat to try and get every person who's eligible to vote. I'm wondering how much money is being spent, and in addition, what is the biggest concern in terms of these elections? Okay, the lady in the 4th row over there with that black dress, उनको दे दीजिए, माइकर्स, मिडिल में, हाँ, उनको जो बीच में है, वो लेडी जो है, हाँ, give it to her, yes. Switch on your mic. Hi, I'm Ashlyn. You said in your speech that... Can you just introduce yourself? I'm Ashlyn Matthew. From? National Herald. Thank you. You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the ECI has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? Yeah, the gentleman in the second row here. Yeah, please. Yeah, mic is live. Hello. Sir, Venkatraman from Dinamala, from Tamil Nadu. Sir, every election you are getting new experience regarding the control of money power. How are you going to control the money power? For example, last election 2019, at Vellore constituency, the candidate Kadira Anand from his place, crores and crores of rupees money has been recovered from him. But what kind of action has been taken against him? And he is going to be the future candidate from the same constituency. Let me first take the answers of these questions of the first round. First question ये था कि 7 फेज में इलेक्शन क्यों, और अपोजिशन पार्टीज का ये आरोप है कि 7 फेज में होने से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, किसी को फायदा होता है। एक बार कभी पूरी कंट्री का भौगोलिक और ज्योग्राफिक इतिहास और ज्योग्राफिक स्थिति को नजर डाल के देखिए। नदी, नाले, बर्फ, पहाड़, जंगल, गर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कभी सोच के देखिए। दे विल बी मूविंग लाइक within 3 to 4 days between the gap in the phases, they will walk length and breadth of the country. उनके ऊपर प्रेशर कभी देखिए कितना होता होगा। कभी इलेक्शन मशीनरी की पूरी प्रोसेस, कभी एग्जाम्स, कभी फेस्टिवल्स, होली, रमजान, रामनवमी, पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स बीच में है। जब कैलेंडर पे हम लेके बैठते हैं तो एक डेट फिक्स करते हैं, दूसरे में चली जाती है, दूसरी फिक्स करते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। हम किसी को फेवर करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते। किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है। हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। जहां की जो
मैंने कहा था हर राज्य अपने आप में अलग अलग है, किसी राज्य में 1 में भी है, किसी राज्य में 7 में भी है। जिन राज्यों में 7 में है वहां का विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं, कंटेस्टेशंस ज्यादा हैं, इसलिए वो 7 में है। माय फ्रेंड फ्रॉम दी तमिलनाडु हैज आस्क्ड, वहां 1 में है, लेकिन वहां दूसरा चैलेंज है जिसके लिए व्हाट ही हैज टॉक्ड अबाउट, देयर इज ए चैलेंज ऑफ मनी पावर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, एंड एज आई मेंशन्ड वी आर एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ व्हाट ही हैज आस्क्ड. If you learn it from the assembly elections which happened in another southern state recently, we have been able to cure that menace of money power to a very large extent, and we would control this. Please don't be worried. Similarly, I'll on the expenditure side take this question from BBC that how much we spend. Each candidate is allowed to spend in the parliamentary constituencies up to 80 lakhs, up to limit, and in the assembly up to 90, up to 90 lakhs, and in the assembly up to 38. So if you combine amongst the candidate, that's the upper limit, which is the expenditure. You have asked about, somebody asked about EVMs. EVMs के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, आपने फिर क्वेश्चन पूछा है तो, और देश में एक ऐसा अभियान भी चल रहा है जिसको बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार में बता ही देता हूं। वैसे बहुत बार बता चुका हूं, 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की हुई? ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। क्या कहा है? कभी कहा कि इसमें वायरस लग ही नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस। कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी कहा कि व्हेन देयर इज सेक्शन 61A इन द आरपी एक्ट व्हिच एम्पावर्स द यूज ऑफ द ईवीएम, जब तक वो खत्म ना हो जब तक ये प्रश्न उठाना गलत है। कभी कहा कि ईवीएम्स आर फूल प्रूफ डिवाइसेस फॉर काउंटिंग एंड एलिगेशंस ऑफ टेम्परिंग आर बेसलेस। कभी कहा कि आप 1 के बदले 5 वीवीपैट गिनिए, वो हमने शुरू कर दिया। अब तो ये आ गया है नतीजा कि कोर्ट्स ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्चीवियस कहते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया, फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म की है। कितनी बार सुनेंगे? क्यों बार बार वही बिलाप करना है? कोई चीजें तो हमसे पूछिए। हैक नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती, एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है, बार बार परिणाम आते हैं। कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे, वो डिब्बा लेके एक बैठ जाता है, और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो थोड़ा एक्सपर्ट बन जाता है। आजकल 1-2 एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कहाँ की डिग्री हैं, कहाँ के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा देखना भी चाहिए। वो बताते हैं कि ये डिब्बा है, वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है, उसमें से एक गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है, वो धरना भी हो जाता है कि ये स्लिप बदल गई, मैंने यहाँ बटन दबाया था और यहाँ ही गलत निकल गई। भाई आपने क्या दबाया था, किसी को बताया था क्या? क्या निकला, किसी को बताया था क्या? अरे संविधान कोर्ट्स कह रही हैं। अच्छा, जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको FAQs में डाल देंगे। 100+ क्वेश्चन है। और भाई, पॉलिटिकल पार्टीज have come into existence because of the EVMs. There are many smaller political parties which in the age of the ballot papers might have not come into the existence. It was the fairness, and the political parties know in the heart of their hearts. सब EVMs का 3-3 बार मॉक पोल होता है, कैंडिडेट्स के सामने में होता है। फिर भी अगर कुछ आप किताब लाए हैं, किसी के पास है क्या? एक हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस, 40 केस। देखिए,
These are 40 cases on EVM. इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे. इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं. देखिए, हमारी वेबसाइट पे है ये. थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं वो. बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है. हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी. तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर. तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं. अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं. ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं. अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं. वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो. और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है. ये क्या बात है भाई? कितने दिन? EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now. In last 2 years, again, we have done large number of improvements. एक EVM की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ जो MCC के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रहे हैं. पूछना नहीं चाह रही हैं, आरोप लगा रहे हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए. करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क. आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए. सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं. उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो, उस नोटिस के बाद, जवाब आने के बाद भी हमने, ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है. वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड. और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउसएवर हाई स्टार कैंपेनर he or she may be, we will not sit back, we will take action. Next. Sir, we'll take some questions from that side. Yeah, the middle row. That gentleman was holding. All right, so that is the Chief Election Commissioner there, Rajiv Kumar, who's just put out the schedule of the big elections for the 18th Lok Sabha. The elections will, of course, happen in 7 phases. They'll start on the 19th of April and will go on until the 1st of June. That is the last and the final phase of the elections. And the results will be out on the 4th of June. So this, of course, is the schedule that has been put out. And the Chief Election Commissioner there was talking about a number of different questions that were posed to him, including about the EVMs, including about how the Election Commission, of course, conducts itself when allegations and, of course, complaints are made about the model code of conduct, a whole host of different issues. But just look at the logistics of conducting an election of this scale. This, of course, is the biggest electoral challenge that, of course, is presented. Just the logistics of how to go about conducting an election on this scale. And to give us more perspective on this, we're being joined on this broadcast by Mr. R.K. Upadhyay, who is a senior journalist. We also have our principal diplomatic correspondent, Siddhant Sibal, is joining us from New Delhi. And we also have our correspondent from Mumbai, Disha Shah, who's also joining us on the broadcast. Siddhant, but let me, in fact, begin with you first. We just heard the schedule that was, in fact, spelled out by the Chief Election Commissioner. And the elections are to start from next month onwards, and they'll go on until the 1st of June.
Well, yes, Mohammed, I'm just standing inside the Vigyan Bhavan. Behind me is the place where the presser is still going on, but a lot of media presence and the Election Commission making the bigger announcements. The dates are out, 7 phases, almost a 2 months time period. And of course, the numbers are huge in terms of the voter participation, the first time voters, and the focus of the Election Commission on making sure that this time that the elections will be violence-free. In fact, what the Election Commission, before the announcements of the dates, focused on something that might be missing out in the media is in terms of how it's using drones to make sure that there is no violence. And secondly, fake news is something that the Election Commission has highlighted as the biggest worry for them, and they are taking measures to curb that. But essentially, it's the dates that everyone was waiting for, whether it's the 19th of April or the big day on the 4th of June, when, of course, the results will be out. We know that when it comes to the climate here, it will be summers, hot summers, but also political temperatures hitting hot as India goes to elections. Absolutely, indeed. That of course, is what will happen. It will be the torrid summer in the Indian subcontinent, but of course, we'll be looking at the elections very, very closely. And I'm told we also have Idris, who is joining us from Srinagar as well. Idris, do stay on with us. But first, let me in fact bring in senior journalist R.K. Upadhyay, who's joining us live from Bengaluru. Mr. Upadhyay, you've been witness to so many general elections in India. You've witnessed how things, of course, happen. This is, of course, the big moment in India's democracy. This is the biggest election that happens anywhere in the world. 97 crore people who are eligible to vote. And just the task of conducting these elections, the logistics of it, is just monumental. Nothing like this happens anywhere else in the world. Absolutely. I was looking at the figures of the voters it's going to be. Now it's going to be close to 1 billion voters. 1 billion is 100 crores. Almost there. 97 crores is what the Chief Election Commissioner mentioned, including addition of about 2 crores new voters. So all these people will be going for voting in 7 phases starting from April 19th. And it will go on till June 1st. And the final mega result will be on the June 4th. What an amazing election it's going to be, in 28 states and 7 union territories across the country. And so many myriad states, and there are so many issues in each state. And you have 4 states assemblies which are going for polls. As the Chief Election Commissioner mentioned, I think Odisha is one state which will be going for polls, and Sikkim, then Arunachal Pradesh and Andhra Pradesh. So these 4 assemblies will also have simultaneous elections along with the Lok Sabha polls. And then there are some 26 by-elections to the assemblies seats which are vacant. And the Chief Election Commissioner, Mr. Rajiv Kumar, was saying, with this, we'll be completing all the vacancies that will be left. So this election process, which is going to begin from April 19th, which means just about a month from now, will kick off the biggest election that the country will face. And as you know, this is going to be a very interesting election, because the Prime Minister Modi and his UPA, that is the NDA government, is seeking the 3rd consecutive term. This is first time after Mr. Jawaharlal Nehru had 3 consecutive terms. We all know, from the first election in 1952 to 1967, the Congress won 3 consecutive elections, and after that, no single party has got 3 consecutive elections. Of course, Mr. Nehru passed away in 1964, and Prime Minister Modi, who came to power in 2014, is now seeking the 3rd term. And if he gets that, and he'll be creating history. Absolutely, indeed. The Indian Prime Minister, who's gunning for a 3rd straight term, is of course chasing history. Mr. Upadhyay, do stay on with us. I'll of course come back to you in a bit, but let me in fact bring in my colleague Idris, who's joining us from Srinagar. Idris, we were expecting some kind of announcement to be made about Jammu and Kashmir as well, because elections must happen in Jammu and Kashmir. What's happening on that front there? How is politics in Jammu and Kashmir shaping up at this moment?
Well, absolutely, Saleh. A lot of hopes were actually pinned both by the locals as well as the politicians of Jammu and Kashmir that both the elections, parliamentary as well as assembly elections, will be announced today by the Chief Election Commission. But that didn't happen. Although the Chief Election Commission was in Jammu and Kashmir earlier this week, and he had consultations with all the political parties and also with the security agencies, basically focusing on assembly elections, whether they can be held with the parliamentary elections. But it seems that the security agencies in Jammu and Kashmir have not given a go-ahead as of now. That's what our sources are telling us. But political parties and the locals definitely would be disappointed by this decision, as the last time the assembly elections happened in Jammu and Kashmir was in 2014. Also talking about the stance that the political parties have been taking, they've said that Jammu and Kashmir has been witnessing huge tourism potential in the last 5 years. And if 2 elections are held in the Union Territory of Jammu and Kashmir this year, it will also impact the tourism industry. Which also, if we talk about the security perspective of the whole election, we are being told that the security agencies apprised the Election Commission that there are sensitive areas across the Jammu and Kashmir, Union Territory of Jammu and Kashmir, especially in the Kashmir region, where they would need more security, and having both the elections at the same time will not be possible. Absolutely, indeed. Idris, do continue to stay on with us, and let me bring in my colleague Disha Shah, who's joining us from Mumbai. Now, Disha, the state of Maharashtra is so crucial. There are 48 seats on offer there, and the Bharatiya Janata Party, which, you know, as a part of its NDA alliance, last time round, out of the 48, had managed to win 41. This time round, it would like to increase the number of seats that it has won by even more. How are things shaping up in the politics in Maharashtra? Well, certainly as per the Election Commission of India, Maharashtra will be voting in 5 phases out of 7. And of course, Maharashtra is crucial because it has the second highest number of seats, 48, just after Uttar Pradesh. And even though the Election Commission of India has declared the phases and the dates, but it certainly seems the political parties here, be it the NDA-led parties or the Mahavikas Aghadi-led parties, are really not ready as to which candidate will be, there in which constituency, because even till now, at the last minute, the seat sharing formula has not been finalized or formalized here, even though both of them have been saying that how it is in the final stages. We have seen multiple rounds of discussions taking place in Mumbai, the financial capital city. We have also seen multiple rounds of discussions taking place in Delhi as well, with the Union Home Minister Amit Shah bringing in some peace, because even the NDA side and the MVA side, all the political parties have been eyeing for more seats. So to bring a peace in this matter, we have seen number of negotiations, but that has not taken place. And Maharashtra is always known as a swing state. So we are waiting for that official announcements coming in by both the NDA as well as the MVA. Even though the Election Commission has declared the dates as far as voting and the counting is concerned, the last minute hurdle in Maharashtra still remains. Absolutely, indeed, Disha. Do continue to stay on with us. And Siddhant Sibal, if I can bring you in, you were, of course, there at the press conference where the Chief Election Commissioner read out the schedule. He also spelled out, the great lengths to which the Election Commission in India, of course, goes to ensure that every eligible voter gets a chance to vote, and it is ensured that there is a polling booth in less than 2-kilometer radius of that individual who has to vote on the day of the polling. Now, he also spoke about the big challenge of combating fake news, considering that this is, of course, the digital age, and it is so easy for stuff to, in fact, spread and go viral on social media. Tell us a bit about the efforts which the Chief Election Commissioner there highlighted as to what the Election Commission in India intends to do to ensure that fake news does not spread during these elections.
Well, Mohammed, the press conference is still underway, and as I started by talking about the various M's, whether it's the muscle power or misinformation, is something that the Election Commission is going to target as it has been doing in the past. But fake news, of course, was something that the Election Commissioner pointed out several times as to how, of course, there will be a separate page on the Election Commission's website that will be put that will point out the reality versus the myth as well. It looks like the government machinery is going to make sure that there is no fake news, and immediately if it's pointed out that a certain bit of information that has gone on social media and is deemed as fake news, that will be removed by the authorities. In fact, social media was also pointed out several times during his press conference. In fact, when it comes to a big announcement, it was hardly an announcement of 15 to 20 minutes. The Election Commissioner basically focused a large portion of his press conference was on dealing with the menace of misinformation, muscle power, and of course how it's going to conduct the election across the country in terms of the voter base, the first-time voters, and how when it comes to polling booths there will be amenities for the people as well. But it's the security that is also something dominating the discourse. The Election Commissioner pointing out the forces that will be presented, and the message clearly was that the last man standing, anyone who is eligible anywhere in the country, from Kashmir to Kanyakumari, from Assam and Northeast to Gujarat, they will get an opportunity. The election will be making sure that they get to vote as well. The biggest challenge, of course, for the Election Commission is also to make sure that the young are enthusiastic to vote on. They do not use their holiday in terms of the holiday given to vote, cast a vote for actually holidaying. So that was a message as well. So all in all, the presser here focused on several things, but above all, the message was clear that everything that the Election Commission is capable to do will do to make sure that everyone is able to vote in this mammoth exercise, a 2-month-long exercise in which 1/6 of the population goes to vote. Absolutely, indeed. It is indeed a mammoth exercise, and considering just the number of people who are eligible to vote, that is 968 million, which is more than the population of continents put together. Mr. Upadhyay, if I can bring you in on this at this moment. The Bharatiya Janata Party, when its alliance, which has been in power at the centre for the last 2 terms, is gunning not just for a 3rd term, but the Prime Minister Narendra Modi has said that he wants the Bharatiya Janata Party on its own to win 370 seats. That is way above the majority mark, and for the NDA alliance to cross the 400 mark. So what the Prime Minister seems to be hinting at is this time round, he doesn't just want a clear majority, but he wants a 2/3 majority in the parliament. Well, it looks like it, and I think looking at the kind of majo that the BJP and the NDA is exhibiting, they want to intimidate the opposition. I mean, that is what one looks like. I mean, it looks like, because the fact that they're talking about 400 par, that is 400, near 400. And of course, some of the the surveys which have come out are already talking about 300 plus for the BJP. And one survey yesterday mentioned NDA getting 411 seats. Right. So that looks like. But we should point out, Mr. Upadhyay, we should point out that all these surveys, need to be taken with more than a pinch of salt, because most of these opinion polls and these surveys that are conducted do not necessarily turn out to be the final result, because the voter of India is, of course,